Hello guys, welcome back. My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. This is the name of my English channel on YouTube, and I also write the English magazine. The title is My English Magazine, and the subtitle Change the Voice according to the grammar topic. Today I explain to you Change the Voice. I write many magazines, but in one My English magazine, which is on English language and English grammar, only in English language, and two my English magazine, two which is basis on the bilingual language, Hindi and English, mix for all the students who wants to gain the knowledge of English grammar. So it's a very beautiful magazine. There are photograph of mine on the top of the magazine, and the pages are colorful, so beautiful, and there is a signature of mine on the top of the magazine. Today I explain to you my English magazine in this Change the Voice. So I am start to you Change the Voice. Okay, this is the my magazine. Okay, now I start the first page of the magazine. Yeah, active and passive voice. Sentences are of both active voice and passive voice. We have go for learn about active voice sentence. To understand what is active voice and passive voice, let's know the meaning of voice. So I explain to you the meaning of voice. वाक्य एक्टिव और पैसिव के होते हैं. हमने अब तक एक्टिव वॉइस वाक्यों के बारे में सीखा है. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, ये समझने के लिए वॉइस के अर्थ को समझें. वाक्य सक्रिय, अयाज और निष्क्रिय आवाज दोनों के हैं. वर्ब की वॉइस बताती है कि क्या, वर्ब की वॉइस बताती है क्या कर्ता कार्य निर्वाहक है और एक्शन पर कार्य करता है या उस पर कार्रवाई की जाती है, और वे एक्शन का रिसीवर है. The voice of the verb tells whether the subject is a performer. The voice tells us about the subject. Either the subject is performer or acts upon the action, or the action is acted upon him and he is the receiver of the action. Who is the receiver of the action? The voice of the verb tells whether the subject is a performer or acts upon the action, or the action is acted upon him and he is the receiver of the action. Who is the subject is the receiver of the action. Okay. Madhur teaches Kanaika. Kanaika is taught by Madhur. So Madhur teaches Kanika. Kanika is taught by Madhur. It's a types of voice now. So that is the types of voice. There are two types of voice, active voice and the passive voice. Active voice. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सीधा रिश्ता होता है. किसके? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच.
सब्जेक्ट एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को प्राप्त करता है, यानी मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर आता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सीधा रिश्ता होता है, ओके, रिलेशन होता है दोनों में, स्ट्रेट। और ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को प्राप्त करता है, मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर रहता है। In the active voice, there is a straight relation between the subject and the verb. The subject performs the action. Who performs the action? Who performs the action? The subject performs the action and the object receives the action. Okay, and the object receive the action of the verb. The main focus remain on the subject. The subject performs the action. कौन करता है एक्शन? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव्स द एक्शन, वो एक्शन को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? Who is the? Who receives the action? Object. Okay. Now I am explaining to you the object receives the action. Clear? Now the next example. Ram killed Ravan. Subject क्या है यहाँ पर? There is a subject. What is the subject? Subject is the Ravan. Okay, clear? Action killed. सब्जेक्ट राम द्वारा किया जाता है, एक्शन कौन कर रहा है? राम किल्ड रावण। ओके, और ऑब्जेक्ट यानी रावण एक्शन को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है और मारा जाता है। ध्यान राम पर ही केंद्र, फोकस कहाँ आया? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट इज राम, एक्शन किलिंग इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट Ram and the object Ravan receives the action and got killed. So the focus is on Ram. अब है passive voice. What is the passive? Now I am explaining to you passive. Passive voice में verb का action subject को प्राप्त होता है, सब्जेक्ट को प्राप्त होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिकाएं उलट हो जाती हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय परफॉर्मेंस नहीं है, अभी तो एक निष्क्रिय रूप से उसके द्वारा किया जाता है। एक्शन अपितु एक्शन निष्क्रिय रूप से उसके द्वारा किया जाता है। मुख्य ध्यान क्रिया पर है और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्रिया करता है। इन पैसिव वॉइस द एक्शन ऑफ द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट। द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड object are reversed. In passive voice, the subject is an active performer, but the action is performed. Passively by it. The main focus is on the action, and it is not important who performed the action. Now the next. In the next, I explain to you with the
help of this. Okay. I explain all things of this page. Now I explain to you with the help of a format. Look at the following examples. सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट. हिंदी में भी लिखा मैंने सचिन क्रिकेट खेल रहा है, और इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट. नाउ आई एम एक्सप्लेन टू यू अबाउट दैट. एक्टिव वॉइस. What is in the active voice? Now, this is the subject of the sentence Sachin, and the action is performed by subject. Cricket is being played by Sachin. Passive voice. Cricket subject. Other than the subject. Everything is explained to you now. You understand what is the change between them. John reads a book. Active voice. John. This is the subject, okay, of the sentence. John is the subject. Subject. Now, action performed by subject. Who performed the action? Subject. A book is read by John. This is the passive. And a book, it is the subject now. Other than the subject. Action performed by the subject. This is the action. Okay. This is clear? Now, I explain to you the another where I explain to you with the help of a example. Vartika has eaten bread. Action voice यानी active voice. Vartika. Subject. Bread has been eaten by Vartika. Passive voice. Bread becomes the subject and other the subject, and other than subject. Bread is the, this is the, okay. He is beating them. It is an active voice and it's a passive. They are being beaten by him. He is beating by them. He is the subject and the action subject. They are being beaten by him. Passive voice. They is the subject and other the subject. Other than the subject. Now I explain to you with this. उपरोक्त उदाहरणों में हम नोट करते हैं कि एक्टिव वॉइस वाक्यों में सब्जेक्ट से सीधा एक्शन किया है एक्टिव वॉइस ने, और पैसिव वॉइस वाक्यों में एक्शन किसी अन्य द्वारा किया जाता है. From the examples above, we note that active voice sentence the subject is performed the action directly, and in passive voice sentences the action has been performed by someone else. Passive voice rules the conversation. We will have to make a passive voice the following topics separately to get a B understand, to get a better understand. Now the next, this is the next general rule of active and passive. Active voice. What is in the active voice? Active voice
वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय बदलने के सामान्य नियम नीचे बताएंगे. जनरल रूल टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस sentences to passive voice are enumerated. एक्टिव वॉइस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी एस, वी और ओ को पहचाने, यानी आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एस, वी एंड ओ इन ए एक्टिव वॉइस सेंटेंस. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ बदलें. एक्टिव वॉइस वाक्य का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है. इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद ईच अदर. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस becomes the subject of the passive voice sentence. Clear? Okay, this is clear to all of you. Now I explain to you with the help of another page. verb की फॉर्म की थर्ड फॉर्म में बदलें, क्योंकि हम हमेशा पैसिव वॉइस वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ओके, चेंज द फॉर्म of the verb to third form because we always use the third form of the verb in passive voice sentences. Rule 4. Active voice